Estaba pensando que yo puedo presentar a nueva profesora. Entonces ahora con nosotros Mary. Hoy ella va a escuchar todas presentaciones. Entonces, ustedes tienen que ser listos. Ok. Sí, estoy listo. Bueno, muy bien. So, ahí Mary, ahí Anushka y Tariq. Anushka vive en Delhi y Tariq vive en Bihar, en India. So, los dos es como mis vecinos, porque yo vivo en Uttar Pradesh. Uttar Pradesh es norte parte de India. Bueno, chalo. मैं voy a compartir pantalla. बलजीत जी को क्या हुआ यार? बलजीत जी जल्दी आइए, एक मिनट उनको मैसेज कर देते हैं. प्लीज ज्वाइन. बलजीत जी की वो भी होती है ना जॉब. चलो ठीक है. ओके, मैं voy a compartir entonces. So, आज आपकी प्रेजेंटेशन. ओके. You have, I'm giving you only 2 minutes to prepare this theme. Baljit ji आगे. Ok, ustedes tienen solo 2 minutos para preparar. Baljit ji, आपके पास 2 मिनट है सिर्फ, 2 से 3 मिनट. Mary, ¿puede hablar inglés también, sí? ¿O no? Yeah. Bien, mejor. Para explicar a ellos porque hay tal vez algunos vocabularios ellos no pueden hablar, entonces puede explicar. जो रेडी हो जाए बोल सकता है कुछ भी शुरू से ही. Creo que pueden escuchar a los vendedores aquí. Sí, podemos escuchar. Es muy chistoso porque en Estados Unidos no hay vendedores y cuando vengo a Colombia es como la papa, la yuca. Aquí también griten. Aquí también griten. ¿De verdad? Sí, claro. Pero no en la noche. Ahora aquí casi 8:30. Por eso. Pero en día sí. Ellos griten así. Pero creo que tiene micrófono, ¿sí? Aquí no tiene micrófono. Aquí natural. Ellos griten normal con su boca. Con su voz. Estás en este momento en Colombia, ¿no? En Estados Unidos. En Colombia llegué hace 3 días. Colombia, bueno. Porque yo también escuché muchos casos de nuevo en Estados Unidos de corona. Ya, es cierto. Ok, चलिए, bienvenido तारिक, आइए, स्वागत है आपका. सर महेश पहले. और क्या? अब मैं कैमरा ऑन कर लीजिएगा ताकि दिखे मैडम को आप. हाँ सर. ओके, तारिक va a hablar, ¿ok? Mary? Sí. Estudio trabajo. Ya voy hablar. पहले ग्रीटिंग करते हैं, नमस्ते, हेलो, कुछ बोलते कि नहीं बोलते कुछ. हाँ सर, वो मैं बतला रहा था ये बोलने वाला. हाँ. Hola a todos. Hola. Buenas noches. Buenas tardes. Yo soy Tarek. Yo trabajo en un restaurante y yo estudio en our language school. Y yo estudio el español en our language school. Nada, solo yo estudio cada día y no tengo trabajo, solo estudio el español. ¿Y cuál es su profesor? Mi profesor nombre es Ridwan. कहाँ प्रोफेसर लिखा है? ¿Cuál es su profesión? Profesión, lo siento. Mi profesión es, yo soy estudiante y yo soy estudiante y yo estudio en our language school y yo quiero aprender el español porque me gusta aprender el español
también yo quiero viajar el mundo, entonces yo quiero aprender el español, porque español es, para mí me gusta español porque yo parece que español es muy muy bonito idioma, entonces yo quiero aprender. 30 seconds Yo और quiero aprender. Y, y también me gusta cultura de España. España, sí, España. Y entonces yo quiero aprender español. Muy bien. Y, Ok, bien. Yo 3 minutos. Okay, muchas gracias. Bueno, Mary, ¿hay algunos errores? Muy poquitos. Ujú. Por ejemplo, cuando dijiste algo de un restaurante, ¿cierto? Sí. Entonces dijiste en uno restaurante y se dice en un restaurante. Sin la O, solo en un restaurante. Ok. Y dijiste algo que es chistoso porque es como en inglés, como usaste la forma de traducir en inglés. Por ejemplo, aunque esa parte no era, cuando hablaste de mi profesor, Ah, sí. dijiste, mi profesor nombre es, y así se dice en inglés, o sea, en traducción de inglés, ¿no? Sería en español, el nombre de mi profesor es. लिख लो तारीख, Como el nombre. ¿Es ना? primero el nombre. O también puede decir se llama Rizwan Khan, también puede decir así. Yo estoy aprendiendo con un profesor, se llama Rizwan Khan. O el nombre, जैसे कि उन्होंने कहा. Ajá. ठीक है, और ये छोटी छोटी एरर है, इसको इम्प्रूव कर लेना. ओके, bueno, ¿hay algunos más errores o no? Y dijiste me gusta cultura, como me gusta cultura de España, y te faltó como La me gusta artículo, la sí. cultura. Solo fue eso. Me gusta la cultura de España. So, यहाँ पे भी la cultura article, ठीक है? Ok. Y también no quiero que tiene que siempre hablar nuevas oraciones, porque 2 o 3 veces dices lo mismo. Como yo quiero aprender español, estoy aprendiendo español. Yo escuché casi 3 o 4 veces la misma oración. So, yo quiero at least something new, you know? Y por ejemplo que primero dijiste que yo estoy trabajando en restaurante y después dices que no tengo trabajo. Entonces, you know, everything should be clear. Ok, pero bien. Ok. So, Baljit जी, bienvenido. स्वागत है आपका. बलजीत जी, ¿estás aquí? Y, अच्छा, बलजीत जी अगर नहीं है तो अनुष्का? Sí. Ok, bueno, Anushka, bienvenida. Gracias. Puede empezar. You can start. Hola. Hola. Hola, me llamo Anushka. Mi apellido es Singh. आवाज चली गई. Hola. Sí. Soy de India. Yo vivo en Delhi. ¿Cuánto 3 lenguas habla? Porque me gusta diferente lengua. Hola. Sí.
yo tengo 23 años. Mi cumpleaños es en 23 abril. स्क्रीन नहीं दिख रहा है इधर, वैसा कैसे रिप्लाई करूं? तीन ही चीज तो है, cómo se llama, cómo, cuál es tu nombre y apellido. तीनों चीजें आपने बता दी। इधर वाला हो गया। एक्चुअली मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा था, मैंने एक्चुअली लिख नहीं रखा है क्योंकि मैं वो बाहर, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा। और इधर का मैंने कुछ लिखा नहीं और मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा एक्चुअली। तो आपके पास तीन ही क्वेश्चन है, आप अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं इसके अलावा, है ना? क्योंकि आपको एक थीम बोली जाएगी। अब एक थीम में आपने बोला cómo se llama, cuál es tu nombre, और प्रोनाउंसिएशन आपका गलत था, apellido होगा। तो आप कुछ भी बता सकते हैं अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में बता सकती हैं, उनके नाम बता सकती हैं, या आप जो भी चीजें हैं ऐसा। बोलिए। Mi nombre es Anushka, soy de India. Yo vivo en Ciudad de Delhi. Mi padre y mi madre. Sorry. Hay 4 personas en mi familia. Ya mi padre y mi madre y mi hermano. El nombre de mi padre es Om Prakash Singh y mi madre es Sheila Singh. Y nombre de mi hermano es Anup. Mi padre es un hombre de ama de casa. Okay, muy bien. Your time is approximately finished. So एक मेरा रिकमेंडेशन, अभी तो वो बताएंगे आपके एरर को, बट माय रिकमेंडेशन कि कभी भी आप बोले तो पॉज बहुत लंबा ना ले, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू टेक टू मच पॉजेस इन योर प्रेजेंटेशन, you just speak your theme and just finish it. Otherwise, if you will take too much pause, then it will not give a good impact to your examiner. So during that time, because in oral presentation they will just see your confidence, nothing else. They will not see your grammar. They will just see your confidence, that you have a confidence to speak with someone in Spanish or not. Okay, so at that time you don't need to think about your grammar, कि it is good or it is bad. Okay, you just speak with confidence, and when you will speak it, then definitely sooner or later you will improve your grammar also, and there is no big mistakes. So okay, Mary, por favor. Maybe it's a little bit confusing for her. Me or me? Yeah. So the first time she say me llamo y como correcto es me llamo. Y creo que es lo mismo, porque cuando dijo mi hablo como yo hablo, sí. Solo fue eso, because when the second part she say everything fine. Yeah, good job. Okay, so अनुष्का, आपको अभी प्रोनाउन पे फिर से काम करना है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, दोनों में आपको काम करना है। पहली चीज जो मैं होता है वो उसका मतलब जो होता है वो जो जैसे मी होता है ना, कि माई सेल्फ है ना, तो उसमें मैं यामो, तो वो आपका, आप उसको मी पढ़ रहे हैं, तो वो इंग्लिश का मी नहीं है, ME लिखा होता है, लेकिन वो स्पेनिश का मैं है, इंग्लिश का मी नहीं होगा वो, है ना। तो मैं यामो। दूसरी चीज, ऐसा कि इन्होंने बताया कि जब भी आप ये बोलेंगे जो आप लो, मैं आप लो कभी नहीं होता, जो आप लो। आपने जो कंजुगासियन पढ़े हैं तो उसमें कभी भी ये नहीं लिखा होगा कि जो आप लो, तू आबलास, यही लिखा होगा, लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि मैं आप लो और ती आबलास, ऐसा नहीं लिखा होगा ना। तो वो आपको सब्जेक्टिव प्रोनाउन के साथ कंजुगासियन हमेशा मिलेगा। तो जो आप लो, सोबरे, मी फामिलिया, और काम डाउन रहिए, ऐसे कोई नहीं कि आप गलत बोल रहे हैं, बस ये थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है थोड़ा सा लूज हो रहा है,
अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो बलजीत जी, estás aquí? बलजीत जी है कि नहीं है? यहाँ दिख नहीं रहा एक्चुअली मुझे। बलजीत जी हैं? बलजीत जी हम आ गए। हाँ जी, आइए, bienvenido, por favor, puede presentar. हाँ जी। Buenas tardes, Buenas tardes. me llamo es Balkit। आप भी मी बोल लो, आप भी मी बोल लो। मैं amo. मैं ही बोल रहा हूँ, मैं llamo Balkit, soy de India, mi apellido es soy vive en España। yo tres idiomas, yo hablo tres idiomas, inglés, español, हिंदी। पंजाबी? Yo vivo más de 10 हिंदी। पंजाबी भी तो Yo बोलते vivo हैं। más, पंजाबी también। Yo vivo más de 10 años en España y con mi familia. Mi familia, yo, mi mujer, mi hijo y mi niña. Y yo quiero para estudiar, por eso yo quiero necesitar español। bueno, está bien, está bien। क्योंकि 1 ही 2 मिनट बोलना है आपको, इसमें ज्यादा नहीं बोलना है, ठीक है। ओके मैरी। Cuando dijiste soy vive, es yo vivo. Yo vivo, exactamente. Yo vivo। Yo vivo. Y, pero en la segunda parte lo dijiste bien porque dijiste yo vivo más de 10 años en España, ¿cierto? Sí. Sí, España। Ajá. Y, pero cuando decimos eso, decimos he vivido, como vivo es presente, entonces trata de decirlo como en pasado, como todo el tiempo. Entonces como he vivido más de 10 años en España, o estoy viviendo hace más de 10 años en España. Ya, solo eso, y se te siente el acento español. sí, claro। तो बलजीत जी देखिए, आपका एक चीज वही चीज जो अनुष्का की मिस्टेक हुई। माइक बंद कर लीजिए आप, माइक बंद कर लीजिए तो मैं बताता हूँ, आपको आवाज आएगी। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने जो प्रोनाउंसिएशन आप यूज करें तो उसमें मे और मी में फर्क समझिए, ठीक है। मी स्पेनिश में जब हम बोलते तो मी ट्रबाको इस तरह बोल सकते हैं, लेकिन मे यामो हमेशा वो इस्तेमाल करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, नेक्स्ट पार्ट आप करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में शो करता हूँ। इसको ना आप ये क्लास को ना आप रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि मेरा ना नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, मेरे को बीच बीच में आवाज ही चली जा रही है, तो हो सके तो मैं बाद में अगर आप डाल दोगे तो मैं देख लूंगी। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, वो लगा हुआ रिकॉर्डिंग में। चलिए, ओके। ¿Y antes hablaban un poquito de español? No, cero, desde cero. Wow. Pero sí, ellos son principiantes. Empecé conmigo en febrero. Y hay otros alumnos como nuevos, ellos pueden hablar español en 3 meses. Yo puedo enseñar a mis alumnos porque yo hice un curso en mi aplicación, que los indios quien quieran aprender español, no importa que viven en qué parte del mundo, y pueden hablar español en 3 meses. Principiantes, no mucho. ¿Y no tienes un curso para aprender hindi en 3 meses? No, hindi no puede aprender en 3 meses, pero creo que, mira, para hindi es un poco complicado porque español es igual que inglés, puede escribir, pero tiene que primero aprender en hindi, tiene que aprender Devanagari, ¿entiende? Pero sí, tengo alumnos que ellos aprendiste hindi también conmigo, porque unos señores, ellos estaban en India en casi un año. Estaba enseñando a ellos aprenden español en un año. 6 meses necesito para aprender cómo puede escribir o leer hindi perfectamente. Y cómo puede escribir. Muy buena experiencia con ellos, porque ahora no, porque ellos volvieron en su país en abril. Y ahora sí tenemos como tiempo diferente, ellos no pueden aprender en su noche. En mi mañana yo estoy durmiendo.
आइए, आपकी बलजीत जी सबसे पहले आएंगे। आइए बलजीत जी, स्वागत है आपका। बिenvenido। माइक ऑन कर लीजिए। Hola, buenas tardes. Buenas tardes। Sí, yo como en casa, me gusta comida casera. Y yo también comer fuera de casa, pizza, pasta y carne también. Y yo hace comida para casa también, y pasta y carne también. Y yo otro gusta también comida de India, hay muy famoso, eso también mucho gusta. ¿Ya está? Me gusta mucho, आप इस तरह से देखिए, आपके बगल में लिखा हुआ है para ayudarte। अब ये जो para ayudarte लिखा है ना, ये मेरा रिकमेंडेशन है और इस किताब का भी रिकमेंडेशन है कि आप इसको इन सेंटेंसेस को इस्तेमाल करिए अपने प्रेजेंटेशन में। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप जो चीज बोल रहे हैं वो चीज आप वो बोल रहे हो जो आपको पहले से रटी हुई है ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप जब कुछ बोले तो कुछ नया चीज को इन्वॉल्व करें, जैसे me voy a hablar sobre, है ना, या mi plato favorito es, और me gusta cocinar। तो इस तरह से ये बगल में para ayudar लिखा हुआ है, इसको भी इस्तेमाल करिए तो आपके प्रेजेंटेशन में और दम आएगा, है ना? ओके सर। चलिए, ओके मैरी। Sí, por ejemplo, yo hago comida. Dijo yo hace comida. Yo hago, ये अभी आपने कल पिछली क्लास में, ellos aprenden en último clase irregular verbos, ayer último clase, y ahora देखो पिछली क्लास में आपने सीखा hago deporte, अभी आप बोलो hace, है ना? तो वो हैबिट में लाना पड़ेगा। ओके, bueno, ¿qué más, Mari? Y la parte como me gusta la comida casera, dijiste, me gusta comida casera. Entonces, como agregar allí la comida casera. Como siempre que vas a decir, me gusta cualquier cosa, dice la o el. Y dijiste, también gusto algo más, y entonces también me gusta. O sea, no como yo también gusto, sino como cambiado ahí, como también me gusta, es la diferencia. También me gusta. O sea, ya el yo cuando vas a decir de ti, no lo utilizas en esa oración, sino me, de yo. O sea, que te gusta. También me gusta. ¿Algo más? Ya, solo eso. Bueno, que tengo yo. Solo eso. bueno, gracias। यहाँ पे बलजीत जी आपको बता दूं कि सभी लोगों को जब भी आप लोग me gusta कुछ भी बोलेंगे, me gusta के बाद आप आर्टिकल का इस्तेमाल करिए। वो सिंगुलर है, प्लूरल है, मस्कुलिन, फेमिनिन। अब जैसे आपने बोला me gusta la comida, है ना, me gusta la casa, है ना, या me gusta el español, ठीक है? तो इस तरह से el la जो भी आपके me gusta los niños, है ना, तो me gusta के बाद आप लोग आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसका जो भी चीज आपको पसंद है उसके बारे में आप लोग बोलेंगे। जो प्रॉब्लम, जो मिस्टेक्स बता रहा हूँ वो सभी लोग लिख लेंगे, एक दूसरे की मिस्टेक से हम लोग सीख के अपनी स्पेनिश को अच्छा करेंगे। तो जो भी मिस्टेक आपकी है उसको लिख लीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम से वो गलती ना करें, क्योंकि अगर आपने कोई मिस्टेक, गलतियां करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियां दोहराना बड़ी बात है, ठीक है? तो प्लीज गलतियां रिपीट मत करिएगा। और जैसे अभी बलजीत जी आपने जो आगो ये बोलिएगा, जो ई से या ये सब कुछ नहीं, ठीक है? जो आगो, है ना, तो इस तरह से आप इस्तेमाल करिएगा। चलिए, bueno, अभी चलिए आइए अनुष्का जी हैं यहाँ पे, बोलिए अनुष्का जी। Hola a todos, buenas tardes. Me llamo Tare. Yo como en mi casa porque mi mamá es ama de casa y yo parezco que mi mamá es buena
cocina, entonces me gusta mucho comer en mi casa y me gusta la hamburguesa y pan y samosa. Sí, yo cocino la comida como arroz, pollo. Mi comida favorita es pizza, hamburguesa y pollo y pescado. Pero me gusta la casa comida porque nosotros comimos juntos, entonces me gusta. Y mi mamá mayoría tiempo yo quiero que comer en casa porque en restaurante no me gusta comer. Y yo prefiero que comer pescado y pescado y carne y pollo. Sí, me gusta cocino. Bueno, your time is up. अरे आपने चलो अच्छा पहले वो बता दे. Okay, Mary, por favor, puedes decir sus errores. Dije cuando estabas hablando de la comida de tu mamá, dijiste, yo parezco Exacto, que... sí, yo también quería explicar eso. Bueno, sí, puede continuar. Y es, me parece que la comida de mi mamá es la mejor, algo así. या sí, आपको मैं parece हमेशा बोलना है कि जैसे मतलब कि मुझे लगता है जब आप ये बोलते हैं या seems का इस्तेमाल जब करते हैं क्या, तो आप वहाँ पर मैं parece, जो परेस को नहीं, मैं parece, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं होता कि मैं लगता है, मुझे लगता है, मुझे लगता है, तो मुझे हमारा प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, मतलब सब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो मुझे, ठीक है, तो मुझे ये सब जो बोलते हैं तो मैं parece, sí, bueno, Mary. Y él habla inglés. Sí, claro. Sí. Muy fluido, como muy bien. Él puede hablar inglés, sí, he knows English. Sí. Porque la primera vez cuando él dijo su oración, también tradujo como de inglés a español. Porque, por ejemplo, él dijo la casa comida, como Hans Food, y en español lo decimos lo contrario. Entonces me gusta la comida de la casa. Exacto. Como no casa comida. Él sabe, he knows that, he knows कि this is wrong, but when you speak, क्यों तारिक, ये तो मालूम ही होगा कि है ना कि casa de comida de la casa, ये तो पता ही होगा, ऐसा है ना कि ये तो बेसिक चीज है, लेकिन होता है बोलते टाइम बिल्कुल मैं समझता हूँ. ओके, ¿hay algo más? ¿Errores? Dijiste algo de más cuando dijiste yo prefiero que comer pescado. No dices que, solamente dices yo prefiero comer pescado. ¿Ahí vas में? जी. Bueno, चलिए आइए अनुष्का जी, bienvenida. माइक बंद कर लीजिए तारिक. अनुष्का जी bienvenida. अनुष्का जी का इंटरनेट लग रहा है खराब है. अनुष्का जी, तारिक अनुष्का है कि नहीं, मुझे चैट में क्लियर दिख नहीं रहा है यहाँ पे. नहीं है. ओके, bueno, चलो मैं तीसरा तरेया खोलता हूँ. ओके, चलिए प्रिपेयर करिए जल्दी से तीसरा tarea número 3. Sabes que Mary, ellos pueden encontrar ahí, las personas que viven en España tienen que dar esos exámenes para encontrar trabajo. Por ejemplo, que para conducir moto,
y resto para trabajar. Ay, अनुष्का जी आ गई, अनुष्का जी, bienvenida, आइए बोलिए. Entonces hago la pregunta y ellos me responden. Claro, Ok. no preguntas más difícil, pero que ya son principiantes. Fácil, preguntas son fácil. चलिए, इसमें आप लोगों ने देख ही लिया होगा. अभी डायरेक्टली मैरी आपसे पूछेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इन इंट्रेविस्टाडोर. ठीक है, तो इंट्रेविस्टाडोर आज हमारे बीच में मैरी है. तो सबसे पहले मैं voy a invitar Baljit जी, ओके, मैरी Baljit जी, हाँ जी. puede empezar. Ok. बलजीत जी ध्यान से सुनिएगा, ओके सर. इज्जत की बात है इंडिया की. हाँ, Comienzo. sí, puede empezar. Ok. ¿Te gusta la comida típica española? Sí, me gusta comida de española. Ok. ¿A qué hora tomas el desayuno? Yo a las 8, son las 8 de mañana. Ok, perfecto. ¿Y qué tipo de alimento prefieres? Me gusta comida de inglesa, desayuno inglesa, Ok. para huevo y pan, mantequilla y lubias y tomate. Muy bien. ¿Hago más o allí? Sí, puede más porque 3 minutos. Sí. Ahora solo falta. Oh, ok. Sí. ¿Hay restaurantes de comida de otros países en tu ciudad? Sí, hay otro restaurante también hay para comida, hay sí, comida hindú y comida italiano también. ¿Comida qué? Italiano. Italia. Italiano. Comida de Italia. Ok. Y ahí también, ahí yo comí pizza y pasta y pescado también. Ok, perfecto. Y dime, ¿cuál es la comida típica de tu país? Hay comida típica de mi país es de pollo masala. Sounds good. Ay, qué rico. Chicken masala. Bueno, sí. Tikka masala y pollo masala dice ahí, España. Okay, bueno, okay, now, ya está, okay, bueno. Good conversation, very good बलजीत जी, आपने लाज रख ली, बहुत अच्छा बोला. सीरियसली आपने सही टाइम पर रिस्पॉन्ड किया. ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आप सोचो कि अरे भाई क्या पूछ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं था. यू हैव आंसर डायरेक्टली. सॉरी सर, मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस भी होया ना इथे. हाँ, वही चीज, क्योंकि क्या होता ना कि if you will go in exam, so definitely examiner will not wait, you know, because if you will give your answer instantly, तुरंत आंसर दोगे, definitely it will be a good impact on examiner. So because I feel also that okay, आपको स्पेनिश का साउंड नॉलेज है, तभी आप इतना अच्छी से रिस्पॉन्ड दे रहे हो. और ये भी है टाइम बिताने के लिए एक और चीज कि वन वर्ड आंसर से बचो. जैसे अगर वो पूछ रही है कि आपके शहर में खाना रेस्टोरेंट है, तो हाँ है ना, इस तरह से रिस्पॉन्ड से बचो. इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर, सी आई रेस्टोरेंटेस en mi ciudad de otro país, तो आप पूरा एक्सप्लेन भी करो, वन वर्ड आंसर मत दो, है ना. हाँ जी. क्योंकि इससे क्या होगा ना, उन्हीं के सवाल में आप जवाब ढूंढ लोगे और टाइम बच जाएगा आपका. समझ रहे हो कि टाइम पास हो जाएगा आपका. ओके सर आप कहाँ रहते हैं, क्या नाम है आपका, जहाँ रहते हैं? मेरा, हाँ जी. मैं तो कौन सा शहर है आपका? लखनऊ. लखनऊ का एक इधर इटालियन लड़का मेरे साथ काम करता है, अभी आया है वो. अरे वाह, लखनऊ रह के आया है. क्या बात है. बिल्कुल मेरा हेलो बोलिएगा उसको. बिल्डिंग बनाता रहे 2012 में 2013 में. क्या बात है, उसको मेरी तरफ से हेलो बोलिएगा.
ओके bueno, अनुष्का जी अभी आपको आवाज आ रही है? क्या करना है सर? आपको अब हारिए जाके। कोई बात नहीं, अभी ये आपसे मैरी सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देने हैं, क्योंकि ये कन्वर्सेशन राउंड है, इसमें आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना है। ये सवाल पूछेंगे, नीचे जो लिस्ट दे रखी है और आपको जवाब देना है, ठीक है? ओके, आइए मैरी, puede preguntar con Anushka. Ok. Anushka, ¿a qué hora tomas el almuerzo? Anushka. Anushka tiene sueño. Ok, sí, está aquí. Hola. Hola, ¿sí puede repetir pregunta, por favor, Mary? ¿A qué hora? मैरी ना आपने पूछा फर्स्ट वाला ना? हाँ, almuerzo. desayuno. उन्होंने पूछा almuerzo. Almuerzo में भी ओके, बताइए जवाब. son las 10 de la mañana. ¿En serio? Para mí no son las 10 de la mañana, es desayuno. Bueno, pero creo que almuerzo no, it's not a breakfast. almuerzo मैंने desayuno का रिप्लाई कर दिया. नहीं, तो मेरे को लंच का बोलना था. वही तो almuerzo 12 बजे के बाद होता है फिलहाल, है ना? मैरी की लग रहा है कॉल आ गई, क्या हो गया, मैरी चली गई है. ओके, मैं पूछ रहा हूँ सेकंड आंसर. मैरी को कुछ हो गया लग रहा है, चली गई. ओके, so ¿qué tipo de alimentos prefiere en la comida? alimentos का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्स, आप खाने में क्या क्या चीजें? हाँ, एलिमेंट्स. एक तरह का फूड ही हो गया. हाँ, क्या मतलब क्या खाना चाहती हैं, किस तरह का? हाँ. Me gusta comida de chino. Prefiero. muy bien. ये देखो बगल पे रखा है चीनो कोमिदा. मेरी बहन पास्ता बना के लाई, लेकिन थोड़ा लेट लाई जब क्लास शुरू हो गई. ओके. ¿Cómo es la comida típica en tu país o en tu ciudad? ¿Cómo se la comida? आप ये क्वेश्चन पूछो ना. ¿Cómo se la comida típica de tu país? Yes. Mi país diferente comida. तो इसमें मतलब फूड्स का नेम बताना है. नेम बताना है और क्या है? mucho tipo de comida. हाँ. ओके. Mi país diferente comida. como pizza, burguras. पिज्जा इंडिया का है. पिज्जा इंडिया का टिपिकल फूड है. वो मतलब इंडिया. अच्छा. हाँ. सॉरी. अभी से मैं भी चली गई हैं. como samosa, como jalebi. Bueno, está bien. ¿Le gusta la comida típica española? Hola, ¿le gusta la comida típica española? लगता है इंटरनेट. ओके, बताइए. इंटरनेट चला गया लग रहा है. ओके, तारिक आइए, स्वागत है आपका. सो तारिक बताइए, ¿hay restaurantes de comida de otro país en su ciudad? ¿Cuál es? Sí, hay muchos restaurantes. ओला. हाँ, बताइए, कंटिन्यू करिए अपना जो पूछा मैंने. तो मैं क्या बोल रही थी? आपको मैंने सवाल पूछा था कि ¿le gusta la comida típica española?
यही सवाल का जवाब तारिक देंगे। तारिक आप इसी सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, सर किसका? यही कि le gusta la comida típica española. Sí, me gusta. Ah, Sí, ¿probaste? me gusta la comida. Sí. ¿Probaste? ¿Qué comida probaste? Dime nombre. No sé el nombre. Entonces, ¿por qué mientes? ¿Por qué mientes? Sí, me parece que me gustaría. Me gustaría, sí, claro. फंस जाएंगे आप, समझ लिए। कभी बात झूठ मत बोलिए। एग्जामिनर पूछता है ओके दी में नोम्bre de esa pregunta, ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है वही बोले जाएंगे। तो इसमें जो जवाब दीजिए उसको उसके बारे में साउंड नॉलेज रखिए। तो सर अरे कुछ भी बोल सकते हैं बली जी, ये बोल सकते हैं चाय, वो कॉफी बोल सकते हैं। कॉफी तो हर जगह कॉमन है ना? हाँ हाँ, वो मशहूर है पाइया, जो रोस्ट से जहाँ अपने पिखारू बना के बनाया जाता है। अच्छा 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 अच्छा, उसको पाइया बोलते हैं, वो सारा चलता है। मैंने वो चीज खाई है स्पेन की, क्योंकि स्पेन का एक कपल आया था मेरे घर पे, उन्होंने मेरे घर पे ही बनाया था। tortilla de patata। हाँ, तब्दील बताता है जी। हाँ जी, अपने अपने आलू को आगे बनाया जी। हाँ, वो एकदम हमारे जैसे टिक्की बनती है, एकदम वैसे ही बनता है। एक और चीज मकई के कुछ बनाते हैं क्या खाने वाले? अब ये तो डिपेंड करेगा, बनाने तो बहुत कुछ बनाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि किस रीजन की बात हो रही है। अभी यहाँ पे खाने की बात हो रही है जो स्पेन का फूड है, तो स्पेन में आप पाइया बोलते, पाइया सर पिज्जा भी बोल सकता हूँ, hamburguesa भी बोल सकता हूँ। हाँ हाँ बोल सकते हैं, लेकिन जब जो चीज खाया हो वो चीज बोलिए, क्योंकि यहाँ पे कोमिदा टिपिका बोला है। और ये चीज, ये जो पिज्जा वूजा ये सब आता है, ये टिपिकल फूड नहीं होता है, ये जान लीजिए। ठीक है सर, पेस्काडो भी बहुत करते हैं लोग जी। हाँ हाँ, पेस्कादो भाई, समंदर किनारे का इलाका है तो पेस्कादो बोल सकते हैं भाई। अब भाई पेस्कादो बोल दो तो पेस्कादो समंदर के, देखो दो चीजें कॉमन रखो, या तो पेस्कादो बोल दो है ना, या चिकन बोल दो, पोयो। ये चीज हर जगह कॉमन है पूरी दुनिया में, ठीक है। और ये टिपिकल फूड में भी आ जाता है, तो इसको आप बोल सकते हैं हर जगह। चलो पोयो, हाँ पोयो बोल दो। चलो, ¿cómo son los bares y los restaurantes en su ciudad? तारिक, ¿cómo son los bares y los restaurantes en su ciudad? En mi país, Ciudad, babu, ciudad. en mi ciudad no hay barros, solo restaurantes, pero los restaurantes es muy bueno y hay es mucho la comida como picante. Bueno, está bien, está bien. चलिए, tarea número 4, लास्ट तarea कंप्लीट कर लीजिए। आपका पता तो चले कि आप कब हैं हमारे साथ, कब नहीं है। सर मैं क्या करूं, मेरा इंटरनेट इतना खराब चल रहा है, कब रुक जाता है, मुझे कुछ आवाज ही नहीं आती बीच बीच में। चलिए फिर अभी इंटरनेट है, सुनिए अभी इंटरनेट है, जल्दी से जवाब दीजिए। Hay restaurantes de comidas de otros países en su ciudad, ¿cuál es? En mi ciudad